special day of yours. Not many years ago, I was there. And I wish that all of you become more famous, more richer. I sincerely wish that for every one of you, because it is possible. When I was studying, my mom and dad told me, study, 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 study. You'll make it big, study, study, study. I know I shouldn't be advising you, but I studied really hard. I topped 10th standard, I topped 12th standard, I topped college. But then, when I wanted to study further, my parents could not afford it. I could not afford to study further. And I had no dream, no future, nothing. So what I'm trying to say is, I know that you believe that you are supposed to take the path that your parents, that everyone expects of you. But I am here to tell you to dream. Dream whatever you want. You will fail. It is hard, but you should persist. And that's what I did. All right, this part you have heard till now is of 2 minutes. Now, can you explain what exactly is the speaker trying to say here? In that video, she was stating that I think she has won in her college, and she was giving a speech that she has taught in school, colleges, and when to do further studies, she has no money. She can't afford to do it further studies, and she said that we should dream higher, and then we will achieve it. Okay. She tells that in starting there, she tells, I and you all become richer, and Ramna is concept. Okay, first of all, the concept that you will explain is whatever video or audio you will be hearing, you need to evaluate each and every part. For example, first thing, the person who is speaking is a very successful person. Obviously, that's why every people are listening to her. Same thing, she is sharing her life experience with every person so that she can motivate those people to have dreams. Okay, she actually wants each and every person, each and every people who are included in the crowd that are listening, जो लोग वहां पर सुन रहे हैं उनकी बात, ना सिर्फ वो उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, ना सिर्फ वो उनको परसुएट करना चाहते हैं, बल्कि अपना एक्सपीरियंस बताने के साथ साथ कर रही है. ठीक है, she is not only telling you to do something, she is showing you how to do that. Exactly. Okay, by telling that you should be dreaming, because she has done a lot of things that were accepted from her. जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो सारी चीजें वो कर रही थी, लेकिन बहुत सारी चीजें अब उन्होंने जब एट द एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उस दौरान nobody was able to support her, so she started following her dreams. Okay, so let me give another one to you. Sorry, that's determination and prestigious exams and interviews. This one is very interesting. You should listen to that only. Namaste. Today, as you see me as a package of success, when my bio says that I have cleared all the top prestigious exams and interviews of India. My friends, let me tell you, not more about my successes, but more about my rejections, my failures, and my determination, my willpower that made me to get those successes.
So my story starts from a small sleepy village of Madhya Pradesh with a population of barely 1,000 people. On the month of rainy August, a small girl was born in our Orthodox Brahmin family, a family that was giant and joined with 30 plus members. It was not an event for them. There was nothing that worth celebrating happened that day when I was born. Only 2 souls on earth were happy. Obviously, they were to my parents. For the rest of them, it was a normal affair. 25 years down the line, same girl, same village, and the whole family was welcoming her with garlands, band, slogans like "Gaon ki beti kaisi ho, Surabhi Gautam jaisi ho," and whatnot. What made things to become so different for her? My dear friends, let me tell you how things changed, not only for me, but also for my parents, how all the perspectives got changed slowly, steadily. I was in a joint family. In a joint family, nobody gets, no children, no child gets a separate attention. So we all were treated equally. Life was okay. We were happy. I got admission in my village school, that was Hindi medium, Madhya Pradesh board school. In 5th class, something good happened with me that I remember till date. I got 100 out of 100 in my mathematics paper. 5th class was a board class. So my teacher called me and she said, "See, I have never seen anybody scoring full marks, that too in mathematics, that too in board exam. You have done this, so I think you are going to do something good in studies." That was the day when I felt appreciated and recognized, and I given this clear message to universe that in future, all I'm going to do is to be a studious girl, because with the studies comes recognition. With the studies will come appreciation for me. Otherwise, in this family, I'm not going to get this at all. So I started to focus more on studies. But my heart, it always wanted to diversify. I wanted to do everything. I started to try my hand at painting, sketching, drawing. I started to do embroidery also. I was busy with my, village priest and all the pujas and all the Ramayana ayojans and everything. And I was not noticing the pain that was creeping in my body. I started to feel the pain in my joints and my elbow and every joint of my body. And after some time, I was bedridden. My parents took this decision with their meager resources to take me there. We went there at a place called Jabalpur, and doctor said that your daughter has this rheumatic fever. What happens in this disease is there are viruses always present in air. Now and then they attack the body of children and they create pain. And when it becomes serious, what happens? They attack your heart and they disturb the semilunar valve. And in some cases, it leads to death also. It was a shock for them. But then they asked that what can be the possible treatment. As a treatment, doctor suggested that she should be given the dose of antibiotic, and that antibiotic was penicillin. There's some problem with penicillin. What happens, as soon as it enters the body, it gets solidifies when it comes in contact with air. So it was again a problem because I had to be injected with penicillin every 15 days, and not every MBBS doctor was ready to do this, because it can also lead to death in some cases. So in village, in every 15 days, it was also difficult to get a skilled doctor to inject me with the confidence that I will not die. Well, life was going okay. There was a problem of electricity in my village, so I had to study in kerosene lamp. I had other problems. There was no tuition. School situation was also very bad. Then the second best thing of my life happened. It was a 10th class result. My 10th results came, and I again scored 100 out of 100, this time not only in mathematics, but also in science. And my percentage was good enough to place me on the state merit list. Well, I became a pseudo celebrity of my village. I was in news for quite a week, and the news. All right. There are 3 aspects that you need to remember if you're going to answer the questions that are regarding to the terminology that has been introduced. The problem that she had was basically, first of all, obviously she was from a very small village, but the physical problem or the personal problems that she had was the disease and the
problem that she had regarding the treatment of the disease, and also the problem that is related to her studies. That means what background studies that she has. Even having the background of Hindi medium, or having the background of where English is not a prominent language, she has both. If you listen carefully, you can hear some of the words which are not pronounced very correct, very accurate. Okay, this is because she is not a good speaker in English. She has learned English when she got admission in college. Before college, that means up till 12th class, she was purely Hindi medium student. How she overcome that? We will get to know. Paper interviewer came to me and Achha, he one more started. thing, pseudo. What do you mean by pseudo celebrity? Pseudo का मतलब क्या होता है? Pseudo word सुना है आपने? Word कहीं ना कहीं सुना होगा. No, not pseudo. Pseudo. It starts with P. Pseudo. Okay. This means pseudo का मतलब होता है जो basically fake है या पूरी तरह real नहीं है. So pseudo celebrity means she is famous, but she is only famous in her village or that area, district area. ठीक है. For example, if Bihar Course, some people who are who gets the first division or who are the first person in the merit list of the Bihar state, they will become a pseudo celebrity for a while. मतलब बहुत लंबे समय तक वो सेलिब्रिटी रहेंगे नहीं. और सेकंड थिंग, सारे लोगों को उनके बारे में कंसर्न है नहीं. ठीक है, कुछ लोगों को कंसर्न है, बाकी लोगों को उनसे कंसर्न नहीं है. Ask me questions, how you did this, this is a great achievement and all. And at last he asked one question. Surabhi, what do you want to become when you grow up? What is your career choice? Well, I was not knowing what a career is. All I was knowing that, okay, I'm good at dancing, so I can be a dancer. I can be a singer too. I can paint also. But a career, I told him, sir, I cannot recall anything. I cannot answer this question to you. He said, come on, you have to answer this. You have got a place in merit list. Suddenly, a word flashed in my mind out of nowhere, and I said, I want to be a collector. When he got the headline for the next day, and I was damned. Next day, the news came, collector banna chahti hai Surabhi. This news changed, course of everything for me. After that, everyone was coming to my home with sweets to my parents, and they were saying that Gautam ji, aapki ladki kuch acha karegi. I was enjoying all that limelight, but I was not knowing how to be a collector, what a collector is, and how important he is for society. Well, I went into 11th, I took mathematics, and I forgot about all these things. Yeah, I wanted to correct something that was wrong in my village, that was wrong with my education, that was wrong with the situation of my village, that there was no electricity, there was no proper hospital. So I wanted those things to be on right place, but through collector or not through it, I was not clear. Well, I passed 12th and I got APJ Abdul Kalam scholarship for securing maximum marks in science stream. So again, one more pseudo celebrity status, and with all this status, I came to this big city of Bhopal in this very college and took admission for Bachelor of Engineering. This decision of my parents to send me from the village to a big city for higher education was a big decision, because I was the first girl from my village to go out and study. So it was not only I who was studying here, it was the whole. All right. Till now, whatever you have facts gathered from her speech, what all facts can you tell me, and how you can explain the procedure of her explaining the ideas or the problems that she has faced? What can you tell me from listening to all those portions that you have heard from her speech? She tells that one of the reaction, and the reaction is the first step towards the success. And she said it childhood that he was she is born in August month, and artillery family.
Mohi, I live in Madhya Pradesh, and his name is Sivi Gautam. He got 100 class board, and he he go up study. Then he got 100 marks in both math and science, and then he completed class 12 and he joined the APJ program scholarship in Bhopal. He got a placement of college, Bachelor of Engineering. Yes, what is your facts that you have gathered here? Her name is Sufi Gautam, and she was born in Madhya Pradesh, which is a very small village, according to her. And when she was a child, she got 100% in mathematics subject, and then the times gone, she got a disease, which is chronic disease, according to her, and she has no money to cure that disease, and this and her curing was cure was going, and then her board exam came, and she got 100% in math and science also in her board exam. Then she got admission in engineering college from the APJ Abdul Kalam scholarship, and then she was asked a question, what will you become in your future? Then that time she was in a she has not decided, but suddenly she said that she will become collector, and again and tomorrow her news was in her name was in the news, and yes. Okay. First of all the facts that you are telling, those are facts that she has said. That means you are concentrating words, but you are not expressing her ideas and emotions behind that words. Okay. आप जो बात बता रहे हैं वो सारी बातें तो उसने बोली, लेकिन किस नजरिए से बोली ये आपने उसमें इंक्लूड नहीं किया. ठीक है. That means first of all she was trying to tell in the introduction itself. She said कि वहां पर इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने बताया कि starting में when she was born, it was not a very happy occasion for the whole family because it was a joint family of 30 plus members, and the only people who were happy were her parents. तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो हैं वो हैप्पी इसीलिए हैं क्योंकि उनके तो बच्चा एक ही है, या जितने भी बच्चे हैं उनकी अपनी एक बेटी है, उसके लिए तो पेरेंट्स तो हमेशा हैप्पी रहेंगे. बट द अदर पीपल they will always think that there is one more member who is included in the family and they have to feed and take care of that person. Joint families में regularly आपको पता है ये problems होती ही हैं because number of people are very much. So let's take 5 brothers are living together. So there are 5 brothers, 5 wives of them, and there are children of them. Even if they have only 1 children, there are 4 children in total. Okay, so taking care of 4 children, taking care of 4 male members, the women are very much busy in the household work, and the male are very much busy in getting the money to take care of the 4 children. 4 children because each and every person is responsible for every children in the household. ऐसा नहीं कि अगर कोई बड़ा भाई है उसका बेटा है तो वो उसी का ख्याल रखेगा, नहीं, उसे बाकी के भी बच्चों का ख्याल रखना होगा. जो छोटा भाई है उसे भी अपने बड़े भाइयों के बच्चे का ख्याल रखना होगा. This is how joint family works, and this is how it used to work in the prior eras of our Indian civilization. So basically she tries to tell what कि basically उसकी life में जब तक उसने 5th क्लास में 100 out of 100 मैथ्स में नहीं लाया, कोई भी स्पेशल इवेंट नहीं हुआ. दैट मीन्स शी वाज अ रेगुलर गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल विलेज which who was living her life very normally as any other student or any other girl who is living. Now the thing is कि वहां पर बहुत सारे लोगों को, बच्चों को स्पेशली ज्वाइंट फैमिलीज में या स्मॉलर एरियाज में स्पेशल अप्रिसिएशन नहीं मिलता है because parents are much more concerned
इन गेटिंग द हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, घर को चलाने के लिए ही उनका कंसर्न सबसे ज्यादा रहता है, रादर देन लविंग एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। वो ध्यान रखेंगे अपने बच्चे का कि उसको खाना मिल रहा है, उसके पास कपड़े हैं, उसके पास पढ़ने के लिए वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इससे ज्यादा ध्यान वो नहीं रख सकते। वो बैठ के बात नहीं करेंगे कि हाँ बेटा ठीक है कि नहीं, स्कूल में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्चे अपना बोलते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, तो वो सुनते नहीं। These are the emotions behind the words that she was trying to tell, and this is the difference between only listening and active listening, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। Active listening is a concept which communication is very much which is the base of communication, क्योंकि जब आप किसी की बात सुनते हैं, आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं, उसके पीछे का इमोशंस भी सुनना है। सेकेंड थिंग, व्हेन शी गॉट द एप्रिसिएशन फ्रॉम हर टीचर, जब उसके टीचर से उनको अप्रिसिएशन मिला, तब उन्हें समझ में आया दैट देयर इज समथिंग स्पेशल इन हर। दैट मीन्स व्हाट, कि उसे बाकी लोगों से कुछ अलग लगा। जैसे आपको अगर क्लास में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, टीचर ने बोल दिया कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, तो यू फील गुड, राइट। वही चीज अगर आपको बार बार डांटा जा रहा है सबके सामने, तो आपको बुरा लगता है। बट द थिंग इज, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, आर नॉट कंसर्न्ड इन नोइंग वेदर देयर चिल्ड्रन आर feeling good or feeling bad in the school room. इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी। पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीने का या अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को इंक्रीज कर देते हैं, दैट दे नो हाउ टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि कई बार बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं to get the appreciation and love that they wanted from their parents and from the teachers. जब उनको लव एंड अप्रिसिएशन नहीं मिलता है अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से, तो वो किसी गलत लोगों के संगत में चले जाते हैं जो उन्हें सिर्फ झूठ बोलकर अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया। दैट मीन्स शी वाज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी नेगेटिव इफेक्ट, बट शी एक्चुअली फाइंड अ राइट पाथ। मतलब उस टीचर ने सिर्फ एक बच्चे को अप्रिशिएट कर दिया क्योंकि उसके फुल मार्क्स आए, उस वजह से उस बच्ची का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। She got a right path that if she wanted appreciation in her life, she had to become a studious girl. Studious girl पढ़ाई में, ठीक है। तो studious girl बनने के लिए जब उन्होंने तैयारी शुरू की, and in between 5th standard to the 10th board, she got a disease. Now the thing is, in poor family, getting a disease is also very much a problem, because if you are having a disease that has cure on a regular basis, तो उनको रेगुलर बेसिस में खर्चा भी करना होगा। जो उनका 15 डेज का डोजेस था ऑफ पेंसिलिन, इट कॉस्ट एवरी डोज ऑफ द पेंसिलिन हैज टू कॉस्ट, एंड स्पेशली रेगुलर चेकअप्स हैज टू बी मेड इफ शी हैज सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज। तो रेगुलर चेकअप्स भी जरूरी है कि वो डिजीज इम्प्रोवाइज कर रही है या अभी रुकी हुई है या ठीक हो रही है, क्या प्रोग्रेस है बीमारी का, इसके लिए चेकअप भी कराना होगा। 15 दिन पे उनको इंजेक्शन भी लगवाना है पेंसिलिन का। ईच एंड एवरीथिंग has to be, monetary exchange has to be happen, and this is sometimes very expensive for a family which is living first in a dynamic way, that is in a joint family, and second which is not exactly financially stable. Even after that आप देखिए कि लाइफ की बीमारी या प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के बावजूद वो उस एक टीचर की वजह से, जिसने उन्हें अप्रिशिएट किया, उन्हें अपने पाथ से, सही पाथ से वो कभी भी हटी नहीं, और 10th में भी उन्होंने अच्छा रिजल्ट गेन किया। बिकॉज ऑफ दैट गुड रिजल्ट, शी वाज ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड की वो टॉपर लिस्ट में थी। उस वजह से उनका एक इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया that what she wanted to become in the future. Now here what exactly emotions are swirling in her mind is that कि एक 10th अभी के टाइम में अगर आप किसी 10th क्लास के बच्चे से, उसका एम हमेशा रहता है लाइफ में, कुछ ना कुछ एम रहता है। लेकिन 10 साल पहले अगर आप जाएंगे, 10th क्लास के बच्चे सोचते थे उनका मेजर नहीं है 10th के बाद 12th में क्या लेंगे, ठीक है, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, क्या लेंगे। इसके अलावा पेरेंट्स ना ही उन्हें प्रेशर करते थे लाइफ का एम चूज करने के लिए, और ना ही बच्चों को भी कंसर्न रहता था।
तो स्पेसिफिकली उनका माइंडसेट अभी भी एक चाइल्डहुड सेट में है कि वो बचपना उनके दिमाग से नहीं गया कि वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को करियर और हॉबीज में डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर वो डांस करती है तो वो डांसर बन सकती है, सिंगिंग करती है तो सिंगर बन सकती है। दीज आर बट टू हैव अ करियर दैट मीन्स व्हाट, यू हैव अ करियर पाथ। आप एक एक्चुअल जॉब करेंगे जीवन भर के लिए जब तक आप रिटायरमेंट एज पे नहीं जाते, और आप कुछ कंट्रीब्यूशन या तो अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए या फिर अपनी सोसाइटी के लिए करेंगे, राइट। सो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली अ करियर मीन्स, इतना भी बहुत सारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जाता है टू चूज अ करियर। Now after getting a choice, उनके दिमाग में कलेक्टर क्यों आया? Can you think of a reason? क्योंकि उन्होंने नहीं बताया है कोई कलेक्टर उनके दिमाग में क्यों आया। उन्होंने बस कहा कि बस एक ही नाम, एक ही चीज उन्होंने से फ्लैश किया और उन्होंने बोल दिया कि आई वांट टू बिकम अ कलेक्टर। Why exactly a poor girl from a poor village would want to become a collector? For the development of the village, because आप किसी भी गांव में जाएंगे वहां पर डेवलपमेंट की कोई भी बात करी जाएगी तो वो सबसे पहले नाम किसका लेते हैं? कलेक्टर का। कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी जाए कि गांव में ये परेशानी हो रही है, बिजली की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उनको भेजा जाए ताकि वो हमारा सोल्यूशन निकाल पाए। That means what, even at the small age she was not concerned with a career, but she knew that something is wrong with the village. विलेज में जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं कि वो विलेज से बाहर जाके देखा होगा उन्होंने, राइट। उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया है, यहाँ पर किसी भी ट्रैवलिंग का जिक्र नहीं है, उन्होंने बड़े शहर में वो कभी गए नहीं, तो उन्हें पता क्या है कि वहां पर क्या नहीं है चीजें। कैसे पता उन्हें कि क्या चीजें नहीं है वहां पर? क्योंकि उन्हें उन चीजों की जरूरत है। ठीक है, दे नीड लाइट, सो दे नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इन द विलेज। दे नीड क्लीन वाटर टू ड्रिंक, so they know there is no proper source of water there. तो ये सारी चीजें जब डेवलपमेंट, हॉस्पिटल रेगुलर नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, ये सारी चीजें हमें, हमारी जरूरत जब पूरी नहीं होती है तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि बाहर किसी और जगह वहां पर जरूरत उनकी पूरी हो रही है लोगों की या नहीं। हमें अपनी जरूरत से ही, हमें अपने बहुत सारे नीड्स से ही पता चल जाता है कि हमारे पास क्या कमी है। अंडरस्टूड? सो रिगार्डिंग दैट, उनका दिमाग इतना था, इतने समझदार थे वो, कि उन्हें पता है कि वो कुछ चेंजेस अपने लाइफ में, अपने सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए लाना चाहते हैं। जो चीजें उनके पास नहीं है वो उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब कलेक्टर के थ्रू वो करेंगी, कलेक्टर बन के करेंगी या नहीं करेंगी, ये उन्होंने अभी तक क्लियरली डिसाइड नहीं किया था। सो आफ्टर द इंटरव्यू, बिकॉज शी वॉज अ सूडो सेलिब्रिटी समझा दिया, तो आफ्टर द सूडो सेलिब्रिटी वाज ओवर, क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद बहुत दिन के बाद तो नहीं, कोई 11th, क्योंकि 2 साल लग जाते हैं 12th जाने में, तो 2 साल तक किसी को याद नहीं है, तो वो भी भूल गई कि उन्होंने इंटरव्यू में कुछ कहा था या न्यूज़पेपर में उनका नाम छपा था। बट 12th बोर्ड में अगेन जब उन्हें साइंस और मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स आए, तो अगेन शी गॉट अ एपीजे अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप। एपीजे अब्दुल कलाम जी, आपको पता है बहुत अच्छे से कि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के लिए या साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए अपने टाइम एरा में बहुत सारा डेवलपमेंट क्रिएट किया है। एजुकेशन सेक्टर के लिए उन्होंने जितना सोचा है किसी और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं किया है, because he was a scientist, so he knew the importance of education and he dedicated the whole 5-year tenure of him being the president of India into the development of Indian education system. ठीक है, उनके दौरान बहुत सारे ऐसे स्कीम निकले, ऐसा नहीं कि उनके बाद नहीं हुए या उनसे पहले नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिक एरिया में डेवलपमेंट के लिए स्कॉलरशिप, अपना फंड प्रोवाइड करने का प्रोविजन वो करके गए हैं और वो अभी तक चल रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के स्कॉलरशिप के स्कीम के अंडर उन्हें स्कॉलरशिप मिला एंड वो भोपाल के एक एरिया में बीटेक करने या बेसिक बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के लिए चली गई। नाउ इफ वी लुक अहेड, अगर मैं ये लिंक आपको भेज दूंगी तो आप देख लेंगे, ये बहुत ही अच्छा है, यू शुड नो, बिकॉज here she is trying to tell you what exactly problems she has faced as a college student who has come from a background where English was not a language to communicate,
और उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। आप देख रहे हैं, आपने सुना कि कितनी सारी वो सेंटेंसेस क्रिएट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, प्रोनाउंसिएशन करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक कलेक्टर को या एक आईएएस ऑफिसर को आप सही तो नहीं करोगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। सो आई विल सेंड दिस लिंक टू यू, यू शुड लिसन टू दैट वेरी मच। इट मोटिवेट्स, इट विल मोटिवेट यू, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपना मोटिवेशन किया, एक हिंदी मीडियम से मध्य प्रदेश बोर्ड की जो स्टूडेंट है जिसने साइंस और मैथ्स हिंदी में पढ़ी है, वो एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके किस तरह पढ़ाई की उन्होंने, किस तरह उनका फ्यूचर बना और किस तरह वो कलेक्टर बनी, उसका आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इट विल गिव यू मोटिवेशन फॉर व्हाट इम्पोर्टेंस इज देयर टू लर्न इंग्लिश। तो अभी का आपको समझ में आ गया हाउ टू इवैल्यूएट व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू लिसन। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको अपने ऑडियंस के बारे में, आप उसके जो भी आपके जो स्पीकर है, एज एन ऑडियंस आपकी भी ड्यूटी रहती है कि आप अपनी स्पीकर को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ना सिर्फ आपको वर्ड सुनने हैं, बल्कि उन वर्ड्स का क्या मीनिंग एक पर्सन के लिए होता है। पुट योरसेल्फ इन देयर शू। ठीक है, आप उनके जगह पर रहकर देखिए कि कितना आपको प्रॉब्लम होगा अगर उस तरीके का सिचुएशन आपका रहता। हाउ यू कैन कम अप विद अनदर आंसर। उन्होंने तो अपना आंसर खोज लिया। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है, सेम प्रॉब्लम से, देखो जिस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हुई, इस तरह की फैमिली इनकी थी, डायनामिक फैमिली थी, इस तरह की फैमिलीज तो हर जगह रहती थी उस टाइम पे। जब ये आईएएस ऑफिसर बनी थी, उससे पहले का बात चल रहा है ना, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन इंडिया वर लिविंग इन द जॉइंट फैमिली वेंचर। तो जब डायनामिक फैमिलीज रह रही हैं, तो वो इकलौती तो नहीं थी जिन्होंने ये प्रॉब्लम हो रही थी, ना ही फाइनेंशियल वे में, ना ही फैमिली स्ट्रक्चर में। तो उस प्रॉब्लम का उन्होंने सोल्यूशन अपने हिसाब से निकालने की कोशिश की। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम सोल्यूशन का निकालने का अलग अलग तरीका होगा उनका। आप अपना कोई अलग तरीका भी निकाल सकते हैं। इन दैट वे there are people who have turned to business ventures also, being coming from a joint family, for the recognition, for the appreciation and for the love that they wanted to feel. उन्होंने business ventures भी अपने start किए, business में अपना पैसा कमाने की कोशिश की। ठीक है, आप अगर बहुत सारे जो investors हुआ करते थे, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट में इसीलिए जाते थे, ब्रोकर्स बनते थे वो इसीलिए क्योंकि they wanted to get money as fast as possible because they wanted to support the family. ठीक है, उनकी फैमिली में बहुत सारे आपको ब्रोकर्स के स्टोरी मिल जाएंगे फ्रॉम द प्रायर एरा। 2 डिकेड पहले, 20 साल पहले की अगर आप बात करें, बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे थे जो जिनके फादर की डेथ हो गई थी, वो अकेले ऐसे चाइल्ड थे, अकेले ऐसे मेल मेंबर थे जिनको पूरा घर संभालना था, क्योंकि उस टाइम वर्किंग फॉर अ वुमन वाज वेरी हार्ड। उनको बहुत अच्छा जॉब नहीं दिया जाता था क्योंकि एजुकेशन ही नहीं करवाया जाता था। मोस्ट ऑफ द पीपल 20 इयर्स, आज से पहले अगर 20 इयर्स हम देखें तो इसमें बहुत सारे लोग, बच्चियों को, बहुत सारे लोगों को, वुमेन को एजुकेशन बहुत ज्यादा तो 12th में दे देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा तो आपका बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री तक नहीं जाने दिया जाता था। So if you have a bachelor's degree or if you have a 10th, 11th और 12th qualification, आपको जॉब लेने में कितनी दिक्कत आएगी आप सोच सकते हैं। 10th प्लस के लिए आज भी जॉब कितनी है, बहुत कम, राइट। सेम वे उन लोगों के लिए, स्पेशली जिन लड़कियों को यंग एज में पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी, ठीक है, 8th पास के बाद पढ़ाई नहीं है, किसी की 5th पास के बाद पढ़ाई नहीं क्योंकि स्कूल नहीं था, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें उनकी वजह से उनको एक प्रॉपर जॉब वो कर ही नहीं पाती थी। जॉब मिलेगी भी तो किस तरह की, घर घर जाकर वो एज अ बाई काम कर सकती है, ठीक है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में एज अ कुक काम कर सकती थी, और उसके लिए भी बहुत सारा क्वालिफिकेशन चाहिए होता था क्योंकि खाना अच्छा बनाना है। घर का खाना और रेस्टोरेंट के खाने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, उस तरह का जॉब उनको फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए बहुत मुश्किल होता था कि एक इनकम सोर्स नहीं बन पाता था। That's why most of the people जो brokers होते थे वो बहुत young age में broker बनते थे। Even right now if you go, there are people who are at the age of 11 and 12 and they know about investment more than anyone else, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट है
हमेशा से इन्वेस्टमेंट में, और वो 10 साल की एज से 11 साल की एज से, क्योंकि पेरेंट्स प्रेफर कर रहे हैं ना, पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता है तो एक 18 साल का बच्चा, एक 16 साल का बच्चा जब इन्वेस्टमेंट में खुद से जाता है, उसका जो सक्सेस रहेगा लाइफ में एट द एज ऑफ 25, द सक्सेस ही विल हैव, वो किसी से भी मैच नहीं कर सकता है, बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज ओन। उसको किसी ने नहीं सिखाया, उसको कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, उसको कोई सिखाने वाला नहीं था, वो खुद ब खुद अपनी गलतियों से सीखा, अपने मिस्टेक्स से सीखा। Now the thing is, in as being an investor or being in the part of investment scheme, losses सिर्फ आपके कह सकते हो कि आपके पर्सनल नहीं होते हैं, राइट? अगर आप एक ब्रोकर हैं तो अगर आपका लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि आपने जिसके साथ भी डीलिंग की है, आपके सारे डीलर्स का भी लॉस हो रहा है, right? So based on that, many of the people are it became a very dangerous field for a while. आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो डीलर्स के लिए एक बहुत बुरा समय भी आया था जब डिप्रेशन हुआ था। उस दौरान डीलर्स को बहुत ज्यादा मोलेस्ट किया जा रहा था, उनके साथ उनको धमकी दी जा रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरा पैसा डूब गया एंड ऑल, बहुत सारे यस उनको टेरराइज किया जा रहा था बेसिकली। तो वो सारी चीजें क्यों हो रही थी? बिकॉज बेसिकली दे वर ट्राइंग टू गेट समथिंग अहेड ऑफ देमसेल्फ, वो खुद से आगे बेहतर बनने की कोशिश कर रहे थे। बट द थिंग इज वी नीड सपोर्ट और वी नीड अप्रिसिएशन, ये ह्यूमन नेचर होता है। और यही सुरभि जी ने यहाँ पर कहा भी है दैट द अप्रिसिएशन सी कॉल द राइट अप्रिसिएशन, जो उन्हें मिला सही अप्रिसिएशन, क्या हुआ यहाँ पर उनकी लाइफ का कोर्स पूरी तरह चेंज हो गया। आप सोच के देखिए, अगर वहां पर 5th क्लास की उनकी टीचर ने उन्हें ये नहीं कहा होता कि तुमसे पहले किसी ने 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाया और ये बहुत अच्छा तुम अपनी लाइफ में करोगी, ये नहीं कहने के कारण वो आगे बढ़ पाती क्या? आफ्टर गेटिंग द डिजीज, आफ्टर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द अदर एक्टिविटीज इन द विलेजेस, ये सारी चीजें आपको जब डिस्ट्रैक्ट कर देगी तो क्या आप वापस से जा पाओगे कभी उतना हायर लेवल पर? जब आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे, आपके लिए पॉसिबल नहीं था कि आप दोबारा, आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चे बचपन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनका 3rd क्लास में 4th क्लास में रिजल्ट आ रहा होता है 100 आउट ऑफ 98 99, और वही उसका रिजल्ट आप देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में 10th में रिजल्ट 100 आउट ऑफ 45 55, बेयरली पासिंग। ठीक है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और उस समय जब उनको 3rd क्लास में इतना अच्छा स्कोर आया तो प्रॉपर अप्रिसिएशन नहीं मिला। ठीक है, लोग यही सोचते हैं कि अरे 3rd क्लास तो इजी है, सो स्कोर कर लिया अच्छा मार्क्स तो क्या हो गया, आगे पढ़ो आगे पता चलेगा तुमको कितना डिफिकल्ट है, राइट? यस, बहुत सारे पेरेंट्स यही करते हैं, वो यही कहते हैं बच्चों को कि अभी तो तुम पढ़ना शुरू किए हो, 10th क्लास, अभी 3rd क्लास में हो, 5th क्लास में जाओ तुमको पता चलेगा कितना टफ होता है। तो इंस्टेड ऑफ टेरराइजिंग योर चिल्ड्रन, यू कैन एक्चुअली डू व्हाट, यू कैन अप्रिशिएट द पीपल whatever they are achieving, जो भी अचीव कर रहे हैं उनको अप्रिसिएट करना जरूरी है। So the main learning from this part that you find is that one appreciation in someone's life can change the course of their life. Okay, chaliye, let's end this session here.